Good morning, children. Now we will today take up the topic, that is rules for naming alicyclic compounds. Previously we had done different set of rules for naming the compounds with polyfunctional when there is more than one functional group present. With polyfunctional group, that is, we had discussed about the rules of naming the unsaturated compounds. We had discussed about the rules for naming branched chain alkanes. So that all we have done. Now rules for naming alicyclic compounds. Alicyclic compounds means the cyclic compounds which has property similar to that of the straight chain alkanes. So that kind of compounds we will name, we will see how to name them. The names of the alicyclic compounds are obtained by adding cyclo to the name of the corresponding side chain of hydrocarbon. जैसे कि if I take say this is a cyclic compound, isn't it, with 3 carbons. Okay, अगर 3 carbon वाला straight chain होता तो उसका नाम क्या होता? Propane. Now since this is in the cyclic form, we will name this as cyclopropane. We will name it as cyclopropane. ठीक है? Suppose we take a cyclic compound with 5 carbons. You can see here 5 carbons. अगर straight chain होता तो उसका नाम क्या होता? It would be called as cyclopentane. ठीक है? ये होता cyclohexane. Okay, this would have been cyclobutane. ठीक है? So depending on the straight chain, whatever the number of carbons we give to the straight chain hydrocarbon, we will just add the word cyclo in front of it. So that becomes the name for the cyclic alicyclic compound. ठीक है? So that is the first rule. Second, if 2 or more alkyl chain are present or if substituents are present, then numbering should be done in the alphabetical order of their substituents. This everywhere this same rule applies. Okay, you should have name of the, suppose this is cyclohexane, isn't it? Cyclohexane. Suppose there is an alkyl group here, CH3 group here. Then I have CH2CH3 group at this position and say chlorine at this position. Suppose there is a compound this way. Then how would you name this compound? You can see alkyl groups also, and there is also a substituent group here. So then here you should number the side chains or the substituents according to the alphabetical order. So here this is methyl, this is ethyl, this is chloro. So alphabetical order में सबसे पहले chloro C आता है, फिर E आएगा, फिर M आएगा. So it is 1 chloro. How would we name this? This would be 1 chloro, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरह से नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I start numbering the other way, that is 1, 2, 3, 4, 5. इधर 5 पोजिशन पे आता है. So always the substituents or the alkyl group should get the lowest number. So therefore I will number in this manner. So it is 1 chloro, 4 ethyl, okay, 4 ethyl, 2 methyl, 2 methyl, cyclohexane, okay, cyclohexane. So are you understanding that? So any ring you can have, and you have substituent groups, then those substituent groups should be numbered in such a manner that they get a lower number. Now you may tell me why ethyl should come after chlorine, but then why I have numbered it as 4. I have to go in a continuous manner. I cannot jump from 1 here and then 2 here. No. I have to go in a continuous manner in such a way that all of them get lower numbers. That is how it is. So if I go from here, if I take this as 1, then 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा ना ये. So that is not proper. So we have to number it in clockwise direction only. Okay. So it is 1 chloro, 4 ethyl, 2 methyl, cyclohexane. ठीक है. If suppose I draw a compound this way, this is a cyclopentane group, and I have here CH3 and I have here CH2CH3, यानी एक ethyl group है यहाँ पे. So then numbering I will start from here 1,
2 3, I should not go 2 here, why 2 3 4 बन जाएगा इधर. So इसका नाम क्या होगा? It will be you will also name it as 1 ethyl 3 methyl 1 ethyl 3 methyl cyclopentane. Are you understanding? So that is how it should be named. Okay. Now if a ring contains more or equal number of carbon atoms, then alkyl group attached to it should be treated as the substituent. उसका मीनिंग क्या होता है? सपोज तुम्हारा रिंग में भी 5 कार्बन है. ओके, लेट मी टेक द एग्जांपल. सी, रिंग में भी 5 कार्बन है और एनी चेन जो है उसमें भी 5 कार्बन है. सपोज हियर दिस वे. अब कैसे नेमिंग करेंगे इसको? इफ दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, you are having same number of carbon in the ring and also in the chain. So in that case ये जो alkyl chain है इसको हमें substituent consider करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको हो जाएगा pentyl cyclopentane, pentyl cyclopentane. ठीक है. If suppose I am having, this is a cyclohexane, I have CH2, 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 CH3. Now here I am having the alkyl chain with less number of carbon. So naturally I will take this as the, I will be naming this with, this should be the parent chain. Okay. So this becomes butyl cyclohexane. Okay. So here the ring is having more carbon than the alkyl chain. So this is the parent chain and this would be called as the substituent chain. Okay. So that is, this will become butyl cyclohexane. This will become butyl cyclohexane. Clear? Okay. Now come to the next rule, fourth rule. If side chain contains multiple bond or a functional group, then alicyclic ring is treated as substituent. जैसे suppose ये है, this is a cyclic ring, okay, और CH double bond CH, ऐसा है. तो यहाँ पे ये भी 3 कार्बन वाला चेन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन वाला चेन है. और अभी हमने बोला कि जब इफ द रिंग और द अल्काइल चेन इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देन द साइड चेन शुड बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. लेकिन जब वो साइड चेन में डबल बॉन्ड हो तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट गिनेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो what would be named, how would we name this as? This would be, again नंबरिंग करना पड़ेगा कार्बन को. ये नंबर 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3. ओके, सो दिस विल बी 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है. साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप फर्स्ट कार्बन पे है, सो प्रॉप 1 इन. Are you understanding? So this is how it should be named. Okay, 1 cyclopropyl prop 1 in. I hope that is clear with you. Okay, one more example we can take. Suppose I am having, okay, this is a cyclic group and I have this is the side chain I am having. Also there is a substituent here. Now in this case how many carbons do you find here? 1 2 3 carbon का chain है, but there is a functional group attached here, OH. Then this will be considered as the substituent.
ओके। सो नंबरिंग हियर, अब ये क्या हो गया, फ्री एंड है मतलब वो CH3 है, ये भी CH3 है, एंड दिस इज द साइक्लोहेक्सेन ग्रुप। सो 1 2, ये भी कार्बन हो गया, 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3, अभी मुझे नंबरिंग यहीं से करना होगा, नॉट दिस कार्बन, बिकॉज any carbon will do because OH is at the center. So this will be 3 cyclohexyl, 3 cyclohexyl, isn't it? 3 cyclohexyl propane 2 ऑल्ट। एक और चीज, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, कौन से कार्बन पे, 1 2 3 कार्बन पे। I should number it the other way, okay? Why? What is the mistake I have made here? See, I should number here because there is a methyl group here, 1 2 3. This should be third carbon. So it will be 1 methyl. It should be given as 1 cyclohexyl, okay, 1 methyl, propane 2 all. That should be the name. Have you understood? So whenever OH is there, that means that chain should be considered as the parent chain, and this ring will become the substituent. Okay. Next, if multiple bonds are present in ring, then the carbon with double bond should get lower number. तो देखो, suppose ऐसा है, this is the ring and multiple bond is present in the ring. तो यहाँ पे ऐसा रिंग हो, रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, देन इट विल गिव व्हाट, नंबरिंग कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, देखो ये 1 ये 2 ऐसे करने का, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे 1 शुरू किया 2 3 4 5 6, नो, द कार्बन विद द डबल बॉन्ड शुड गेट लोअर नंबर। यानी एक एंड पे हमने डबल बॉन्ड का एक एंड वाला कार्बन पे 1 दिया, तो उसका नेक्स्ट वाला कार्बन वो डबल बॉन्डेड कार्बन ही होना चाहिए, नेक्स्ट वाला नंबर शुड बी गिवन टू द डबल बॉन्डेड कार्बन ओनली। सो इसका नाम है साइक्लोहेक्स-1-ene, साइक्लोहेक्स-1-ene, ओके। साइक्लोहेक्सीन है या 1 साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे, ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द वेरियस रूल्स, यू कैन कॉपी डाउन। Look here children, there was a small mistake which was done here. See, what is written, if side chain contains multiple bond or functional group, then alicyclic ring is treated as substituent. Now when I look into this compound, see here, this compound it has an OH here. तो यहाँ पे जो तुम्हारा side chain है, it contains how many carbon atoms? You can observe here, it is 1 2 3. अब ये जो है, this should be considered as the 4th carbon in the chain, and this is your substituent which is present at the 3rd carbon. So the name will not be this, it is a wrong way of naming, you please correct it. See how should it be named? It should be having 1 2 3 4, ये 4 carbon का chain हो जाता है. Don't consider this as the this is a substituent. No, this whole chain will become a main chain, and उस main chain में this is the substituent. Okay, so this will be named as 3 cyclohexyl butane, है ना, 4 कार्बन का चेन है, ब्यूटेन 2 ऑल्ट. This is the name of the compound. Okay, so that was a mistake, you please correct it. ठीक है, so you can copy down now.
Now let us name these compounds. देखो यहाँ पे the side chain has a double bond and a functional group. So naturally this will become the substituent. Okay, numbering of the carbon should be done as 1, 2, 3 because C is present with the functional group. So always whenever a functional group is having carbon in it, then that carbon only should be given as number 1. So 1, 2, 3 and now this becomes the substituent. So थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये कार्बन को हमेशा नंबर 1 देते हैं, 1, 2, 3, 4। तो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, 4 नाइट्रो, ठीक है, साइक्लो हेक्साइल, ठीक है, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया। एंड इट इज हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ओइक एसिड में एंड होना चाहिए और 3 कार्बन का है तो मैं लिखूंगी प्रॉप, ओके। थर्ड कार्बन पे आई एम हैविंग सेकेंड कार्बन आई एम हैविंग डबल बॉन्ड, सो प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। 3 थर्ड पोजिशन पे है this whole substituent and that substituent name is 4 nitrocyclohexyl prop 2 in 1 oic acid, okay. Now come to this compound. What do you observe here? That there is a alicyclic compound which is bonded to a benzene. तो फिर इसमें हमेशा बेंजीन के नाम से ही होगा। So this will be cyclohexyl benzene, okay, cyclohexyl benzene, 1 cyclohexyl benzene, either way you can write it, okay, because first position only we will be naming this, okay, or simply write it as cyclohexyl benzene. अब ये देखो, now what do you observe here कि इसमें भी OH group is having the functional group, here also OH group is having the functional group, दोनों में OH ग्रुप है, मतलब हम किसी को भी प्रिफर नहीं कर सकते। अब ऐसा सिचुएशन आए तो हम क्या करना चाहिए, जिस रिंग में अगर ज़्यादा कार्बन है तो उसके नाम से जाना जाएगा ये कंपाउंड। अगर साइड चेन में ज़्यादा कार्बन है तो दैट विल बी नेम्ड आफ्टर एज दैट, दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट साइड चेन। तो अब इसमें देखो 6 कार्बन का चेन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इट इज़ 4 कार्बन ओनली, ओके। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी, दिस साइड चेन का नेम इट इज 2, सेकेंड पोजिशन पे OH है। जब सब्सटीट्यूएंट होता है OH तो हम उसका नाम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ओके। अब इधर ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी, दिस होल थिंग इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन, ओके। सो 1, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल cyclohexane 2 ol, this is the name of this compound, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे there is a side chain में there is a substitution of OH, that means that OH should be now named as hydroxy, okay, क्योंकि वो substituent में है। so 2 hydroxy butyl, 4 कार्बन है इसीलिए, और cyclohexane 1 ol ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन में 4 ही कार्बन है लेकिन रिंग में 6 कार्बन है, ठीक है। अब उसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी, अभी रिंग में भी CHO ग्रुप है और चेन में भी CHO ग्रुप है। अब इसको नेम कैसे करेंगे, वी विल नेम इट एज द डेरिवेटिव, विल नेम दिस कंपाउंड, और दिस कंपाउंड इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन। हाउ मेनी कार्बन्स इन द स्ट्रेट चेन, ये नंबर 1 है,
2 3 4 5 6 है और ये 7th कार्बन है, मतलब 7 कार्बन का चेन है ये। जबकि रिंग में कितना कार्बन है, देयर इज ओनली 5 कार्बन, ओके। और ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये 2 और ये 3। अब दिस बिहेव्स एज अ सब्सटीट्यूएंट नाउ, दिस होल रिंग विल बिहेव एज अ सब्सटीट्यूएंट, ओके। अब इसमें 7 आ जाएगा, 7th पोजीशन पे है, ओके। 3rd पोजीशन पे CHO है। अब CHO का नाम हो जाता है फॉर्माइल। व्हाट इज, जैसे इधर हाइड्रोक्सी हो जा रहा था, इधर फॉर्माइल हो जाएगा। सो 3 फॉर्माइल साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल heptane 1-al. This is the name of this compound, okay. So that is how it should be named when there is a longer side chain, उसका नाम जो chain के longer chain से end होना चाहिए, और that should be the parent chain, and this whole thing will become the substituent. Got it everyone? Okay, now come to the next one. Here there is cyclohexane group, there is CH3, and here there is OH. So naturally you will number it this way: 1 2 3 4 5 and 6. So this will be 3-methyl, this name of this compound is 3-methyl cyclohexane 1-ol. That is the name of this compound. ये क्या होगा? अगेन दिस इज अ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2 and 3 पोजिशन पे मिथाइल है, सो नेम विल बी 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन और हेक्सेन 1-on, okay. So that is the name of that compound. यहाँ पे now here there are 2 functional group and both of them are considered to be principal functional groups. So here OH और double bond O, C double bond O. तो preference किसका है? Preference C double bond O का है। तो इसका the name of the compound should end with that ketone group, okay. So if I number this as 1, this is 2, this is 3. So it is 3-hydroxy hexane 1-on. OH जब सब्सटीट्यूएंट होता है तो उसका नाम हो जाएगा, उसका प्रीफिक्स कैसा नाम देंगे? हाइड्रोक्सी। अगर CHO है तो उसमें फॉर्माइल नाम देंगे, ओके। अब यहाँ पे देयर इज अ CN ग्रुप एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दोनों में प्रेफरेंस CN का है। तो इसमें द नेम शुड एंड विथ CN का क्या नाम होता है? नाइट्राइल, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में अटैच्ड है CN, देन वी विल कॉल इट एज कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि हम जब नाइट्राइल बोलते हैं तो ये कार्बन उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसीलिए हमें कार्बोनाइट्राइल बोलना ज़रूरी होता है। सो दिस विल बी, अब यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट हो जा रहा है C डबल बॉन्ड O, तो अब ये सब्सटीट्यूएंट का नाम है ऑक्सो। सो इफ दिस इज 1, दिस इज 2, सो इट विल बी 2-ऑक्सो, ओके, 2-ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बो नाइट्राइल, यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल बोलने का, क्योंकि हम जब ये पेंटेन बोलते हैं तो ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए कार्बोनाइट्राइल लिखना ज़रूरी हो जाता है, ओके। इधर भी दिस विल बी 2-ऑक्सो, है ना, 1 2, सो 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक acid, carboxylic acid, okay, we will name it as carboxylic acid, ठीक है। So this is how you should name the various compounds. Now look at this compounds.
nomenclature of aromatic compound. Aromatic compound means where you have a benzene ring. Okay, उसमें दो पार्ट होता है. एक होता है the benzene ring, actual benzene ring, which will be called as the nucleus, and the side chain, which will be called as, if any substituent is there of alkyl chain, then it will be called as side chain. अब देखो ये इसका नाम क्या है, this is benzene. ठीक है. If I write benzene ring with a CH3, then this will become what? Methyl benzene. ठीक है. If I have benzene ring CH, sorry here CH, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ तीन ग्रुप है. Okay, it is a V or a T type of a group, so this will be called as isopropyl benzene. ठीक है. If you have a compound like this, if I have CH3 here and CH3 here, then what will be the name? 1, 2, 3. This is 1, 3 dimethyl benzene. ठीक है. ये सब IUPAC name I am talking about. Okay. Now, whenever benzene ring is attached with a CH2 and then that CH2 is attached with some other chain, then this whole group of benzene ring CH2 will be called as benzyl group. Okay. So, if I have, instead of CH2 I have CH and a bond this way, then this will be called as benzyl group. Okay. Then if you have benzene ring with C, then this will be called as benzo. Okay. I hope this is clear. Okay. थ्री ग्रुप्स है तो बेंजो कहेंगे. टू this whole benzene ring CH with the two bonds, it will be called as benzal and this will be benzyl. Okay. अब ये हैलोजन डेरिवेटिव हो जाता है बेंजीन का. तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl है, then it becomes chlorobenzene. What it will become? chlorobenzene. ठीक है. If I have benzene ring Cl and Cl, then it is 1,2 dichlorobenzene. ओके. अब यहाँ पे देखो, जब ऐसा हो बेंजीन रिंग CH2Cl, अब ये क्या है, साइड चेन में देर इज अ फंक्शनल ग्रुप. सो इन दैट केस this will be named as the name of this chain. So ये 1 carbon 2 carbon. Okay. So this will become, अब इधर है ना, ये substituent हो जाता है. अब substituent में ये benzene ring का नाम होता है phenyl. तो इसका नाम है 2-phenyl chloroethane. ओके. या 1-chloroethane, 2-phenyl 1-chloroethane बोल सकते हैं. Follow? No? So in that case you should have the name ending with the chain. Okay. So that is about halogen derivative. There are number of compounds. We will name all of them later as we learn the compounds, that we can learn the names also. Okay. So this is about the halogen derivative. Whenever benzene ring is having an OH group with it, then that will be called as phenol. Okay. अब दो फिनॉल ग्रुप अगर अटैच्ड है, सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी, देर आर 2 OH ग्रुप्स हियर. नो. सो 1, 3, अगर ये 1 ले ले, ये 2 ले ले, ये 3 ले ले, तो 1,3 बेंजीन डाइऑल. ओके. डाइऑल, दैट वे इट विल बी. ओके. So if it is this way, then OH है यहाँ पे और यहाँ
suppose methyl group है, then it will be named as 3-methyl phenol, 3-methyl phenol. ठीक है? So that is how phenol derivatives are, hydroxy derivatives, we call them as hydroxy derivatives. Now यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग CH2OH है. अब ये जो CH2OH है इसके नाम से एंड होना चाहिए, और ये बेंजीन रिंग जो है वो अब सब्सटीट्यूएंट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. सो दिस विल बी नंबर 1, ओनली 1 कार्बन इज देयर, सो इट विल बी 1-phenyl methanol, मीथेन 1-ol, मीथेन 1-ol, ऐसा होगा. Okay, so this is few compounds which we have named here. Then if you have, say suppose benzene ring with OCH3, अब this is an ether group. Okay, so in this you will have the name as methoxybenzene. This is the naming of ether, any ether. अगर हम एरोमेटिक ना लेके एनी ईथर को अगर हम नेम करते हैं तो सपोज दिस इज एन ईथर ग्रुप. ओके, सो ईथर ग्रुप को कैसे नेम करते हैं? द स्मॉलर चेन यू शुड टेक इट एज मीथॉक्सी. इसका जनरल नेमिंग इज अल्कोक्सी अल्केन, ऐसा होता है, अल्कोक्सी अल्केन. स्मॉलर चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप विल बी टेकन इन द ऑक्सी फॉर्म. सो हियर एक ही चेन है, एक ही कार्बन है ना. So the name of this compound will be methoxyethane. Okay, methoxyethane because यहाँ पे 2 कार्बन है. Similarly यहाँ पे benzene is the bigger chain और it is having more number of carbon, so this will be methoxybenzene. इसका नाम ये भी होता है anisole, we call it as anisole. Okay, if I have benzene ring OCH2CH3, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है. इन दैट केस इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, इट विल बिकम इथॉक्सीबेंजीन, और इसका कॉमन नेम है फिनेटॉल. इट इज कॉल्ड एज फिनेटॉल. ओके, so these are few aromatic compounds which we have named today. As the naming of the, as we learn more and more compounds, then we will learn about the naming also. Okay, this was just the basic simple aromatic molecules. Okay.